हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पोएटिक डिवाइसेस एंड आई फील दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंग्लिश syllabus for class 10, okay? And there are many questions I believe could be asked in the MCQs, okay, from English class 10, and very important for SSLC 2025 exams, that is in the month of February, okay? So without further delay, let us start, and it is very, very important, okay? So poetic devices. So I have selected some very important poetic devices. There are many poetic devices, but I have selected the most important ones, keeping your class 10 thing in mind, okay? So without further delay, let us start our class, okay? So the first one that we have is alliteration. Now what is alliteration? Okay, look at the definition, and I have explained in very simple English here, okay, with examples, with very easy examples, okay? So alliteration, look at the definition first, okay? पहले सबसे पहले हम लोग definition देखते हैं, ठीक है? तो डेफिनेशन यहाँ पे क्या है? डेफिनेशन देखिए, alliteration, the repetition of the same sound at the beginning of words close together. Okay, let us see through example. हम लोग example से समझने की कोशिश करते हैं. She sells seashells by the seashore. तो if you see here, she begins with S, sells begins with S, seashells begins with S, and then we have seashore begins with S. So every new word beginning with the same alphabet, beginning with the same letter of the alphabet, is actually called alliteration. Next, you see Peter Piper picked a peck of pickled peppers. So all the new words starts with P. So this is nothing but this is alliteration, okay? हर वो नया word जो एक पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं एलिटरेशन. दैट इज कॉल्ड एलिटरेशन, ओके? सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू थ्रू एन एग्जांपल. अब हम लोग आते हैं इमेजरी पे. नाउ दिस इमेजरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 10. आई हैव सीन इन योर सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑल्सो. आई हैव सीन इन योर MCQ guidebook also, where there are around 214 MCQs. There I have seen MCQs being asked on imagery, okay? तो imagery क्या है? तो these poetic devices, let me just tell you one thing if I have missed it out. These poetic devices are actually meant for your poetry section, not for the prose section, okay? It is meant for poetry. तो ये poetry से ही poetic devices actually, a poetic word means poetry, so these things will come from the poetry section only, from nowhere else, okay? तो हम लोग देखते हैं imagery का definition. Descriptive language that creates a picture in your mind, often using the senses like sight, smell, sound, etc., okay? तो through a language, you see, through the, say for example, poem, okay? The poet will describe the scenes and sceneries, even sound, even smell also, sound also, in such a manner that you immediately you create a picture in your mind. That is actually called an imagery. Imagery comes from the word image. Image matlab picture, right? Imagery comes from the word image, and image means what? Picture. So when a poet is describing something, say there is a poem called Trees, okay? Now the trees are walking outside the house, so you immediately form a picture in your mind that the trees are uprooting themselves and walking out of the house of that lady, right? Then you have Dust of Snow, where the poet is sitting, a crow is sitting on top of him on a tree, and then the shaking of the branches makes what? Snow falling on the poet. So you immediately form a picture in your mind, okay? And let me tell you, poets are very expert in forming imageries, okay? So example you can see here. Example is the golden sun set behind the mountains, painting the sky with shades of orange and pink. Okay, so golden sun, immediately when it is golden sun, you form a picture in your mind, and this golden sun is setting behind the mountains, and it when the sun is setting behind the mountains, okay, it is the evening time, it is setting behind the mountains, painting the sky with shades of orange and pink. Now immediately when you read this line, okay, when you read this sentence, immediately a picture of a sun setting behind the mountain, and the whole sky is painted, colored with orange and pink. This image is formed in your mind, right? Okay, so poets are very expert in, you know, in imageries, okay? So this is an example of imagery,
ओके, सो वो साइट हो सकता है, मतलब दैट यू सी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइट. स्मेल भी हो सकता है, इट कैन बी अ फ्लावर ऑल्सो. Okay, a flower giving a very sweet smell, or a dish giving a very sweet smell, that also can be a part of imagery. And sound also can be a part of imagery. Okay, like you have the baker from Goa. Okay, the baker of Goa, there the baker will ring a bell, and immediately the children will understand that the baker has come to sell you see, bread. Okay, right? So you immediately form a picture in your mind, right? Now let us move on. Irony. What is irony? Irony is when something happens that is the opposite of what you expect. Okay, आप एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते, you are expecting something inside you, but the opposite happens outside. इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बहुत सिंपल एग्जाम्पल, अ फायर स्टेशन बर्निंग डाउन. बर्निंग डाउन मतलब कैचिंग फायर. तो आप इमेजिन कर सकते हैं, यू कैन इजिली इमेजिन दैट अ फायर स्टेशन विच एक्चुअली एक्सटिंग्विशेस फायर of a building, actually that fire station itself catches fire and it burns down completely. तो ये तो अनएक्सपेक्टेड है कि फायर स्टेशन में ही फायर लग गया और पूरा फायर स्टेशन बर्न हो गया. ओके, देन अ डॉक्टर हु इज ऑलवेज सिक. तो डॉक्टर लोगों का बीमारी ठीक करता है, अ डॉक्टर ट्रीट्स अदर सिक पीपल, बट अ डॉक्टर हिमसेल्फ इज फॉलिंग सिक. दिस इज कॉल्ड आयरनी. ओके, ये होता है आयरनी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका ठीक ऑपोजिट होता है. तो ये है आयरनी. से फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप वेरी लेट इन द मॉर्निंग. मैं बहुत लेट जो हूँ, सुबह को मैं बहुत लेट उठता हूँ, बट आई एडवाइज माई स्टूडेंट्स दैट यू मस्ट वेक अप अर्ली. सो दिस इज आयरनी. ये कुछ नहीं, ये आयरनी है. I wake up late in the morning, but I am telling my students, you see, you should always wake up early. But what am I doing? I am just doing the opposite. That is the example of irony. Okay, I hope I am clear with the explanation. फिर आते हैं हम लोग मेटाफर पे. अब मेटाफर और एक है मेटाफर एंड सिमिली. दीज आर वेरी क्वाइट सिमिलर टर्म्स एंड स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी मच कंफ्यूज्ड विद दिस. आई नो दिस थिंग. मेटाफर और सिमिली बहुत सिमिलर टर्म्स है, तो मैं दोनों ही एक्सप्लेन करूंगा और बहुत कोशिश करूंगा. आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. ओके, सो मेटाफर का एग्जाम्पल डेफिनेशन क्या है कि कंपेयरिंग टू थिंग्स बाय सेइंग वन थिंग इज अनदर विदाउट यूजिंग लाइक और एस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट यूजिंग लाइक और एस. अब जब हम लोग सिमिली देखेंगे, व्हेन वी विल लर्न सिमिली, देन आई विल एक्सप्लेन यू दिस वंस मोर. ओके, व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स, आप इतना समझ लीजिए कि मेटाफर इज व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स. से फॉर एग्जांपल, टाइम इज अ थीफ. समय जो है वह चोर है, चुपके से निकल जाता है और जल्दी जल्दी चला जाता है. ओके, टाइम इज अ थीफ. द वर्ल्ड इज अ स्टेज. सो टाइम इज बीइंग कंपेयर्ड टू थीफ. सो इट इज अ मेटाफर. The world is compared to a stage. The world is a stage. The world is compared to a stage, and we all are actors and actresses who have come here temporarily, and ultimately we have to die one day and leave. So it is compared to a stage. Now here, do you find the word like or s? आप यहाँ पे like और s यहाँ पे कहीं पे भी आप देख सकते हैं? नहीं, it is not there. You use a metaphor without using like or s. But in simile, you have to use like or s. सिमिली में आपको लाइक और एज यूज करना होगा, तभी वो सिमिली होता है. राइट? सी, मेटाफर एंड सिमिली आर सेम थिंग्स. मेटाफर एंड सिमिली, मेटाफर एंड सिमिली आर सेम थिंग्स. दे आर सेम. They are same, but in metaphor you don't use like or s. आप like और s use नहीं करते, but in simile you have to use like और s. यहाँ पे आपको use करना होगा. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सिमिली का मीनिंग. लेट अस सी द मीनिंग ऑफ सिमिली. तो इट इज ऑल्सो अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स. मैं फिर से थोड़ा सा पीछे जाता हूँ. मेटाफर इज ऑल्सो कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स. सिमिली इज ऑल्सो कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स, बट यू हैव टू यूज लाइक और एस. तो आपको अगर किसी सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस, इफ यू फाइंड द वर्ड्स लाइक एंड एस, एंड इफ यू सी दैट टू थिंग्स हैव बीन कंपेयर्ड, देन इट इज अ सिमिली. यू क्लोज योर आइज एंड जस्ट राइट सिमिली और जस्ट टिक मार्क ऑन सिमिली. बस खत्म. अगर आपको लाइक और एस आप नहीं देखते, इफ यू डोंट सी लाइक और एस, देन इट इज अ मेटाफर. ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं कि शी इज एज बिजी एज अ बी. नाउ दिस गर्ल हैज बीन कंपेयर्ड टू अ बी. इस लड़की को बी के साथ कंपेयर किया गया है. ये मेटाफर हो सकता था, लेकिन ये मेटाफर नहीं है. दिस इज नॉट अ मेटाफर. व्हाई? बिकॉज यू हैव द वर्ड एस. अगर एस नहीं होता, शी इज बी, देन इट इज अ मेटाफर. But because here is she is as busy as a bee,
क्योंकि एस यहाँ पे है इसलिए ये जो है ये सिमिली है, ये मेटाफर नहीं है। हर स्माइल वॉज लाइक सनशाइन, तो यहाँ पे यू हैव द वर्ड लाइक, सो इट इज सिमिली विदाउट एनी डाउट। हर smile was sunshine, that would be metaphor because there is no like, but when you use the word like then it automatically becomes a simile. Her smile was like sunshine, so her smile is being compared to a sunshine with the word like. She is being compared to a bee with the connecting word s. तो यहाँ पे जो है simile में ये connecting word लगता है like और लाइक एंड एस या लाइक और एस से। इतना आपको याद रखना है, मेटाफर नो लाइक और एस, बट इन सिमिली देयर इज लाइक और एस। तो आप अगर देखते हैं किसी सेंटेंस में तो आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन मेटाफर एंड सिमिली, ठीक है। ओके, नाउ पर्सनिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। किसी भी नॉन लिविंग थिंग, नॉन ह्यूमन मतलब नॉन लिविंग, if in any non-living thing you give living or human qualities, अगर आप कोई human qualities देते हैं तो उसे हम personification कहते हैं। Say the wind whispered through the trees. Who can do the whispering? Only human beings, right? Who can do the whispering? Only human beings can do whisperings, right? But here the wind is whispering. That means what? The wind is being personified as a human being. Alright, look at the next example. The stars danced in the night sky. Can stars dance? No, only human beings can dance. So the stars have been compared to human qualities. तो stars में human qualities दिया गया है. That is why it is personification. When in a non-living thing you give human qualities, that becomes a personification. किसी भी non-living चीज़ में आप जब एक human quality देते हैं, इंसानी quality देते हैं, इंसानी attributes देते हैं, that automatically becomes a personification. So whispered and dance can never be done by non-living things. It can only be done by living things. But you are giving the wind and stars human qualities like whispers and dance. I think I'm clear with this. ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मैं clear हूँ. This is personification. Then we have symbolism. Symbolism is also very very important. Let me tell you for your class 10 upcoming exam. Okay, now what is the definition? Using an object, person or event to represent something beyond its literal meaning. तो definition तो यहाँ पे है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे through the examples to learn the meaning of symbolism. Say for example, a red rose. What does red rose symbolize? When we give red rose to somebody, that means what? We love that person. So red rose symbolizes love. Can anyone tell me what does yellow rose symbolize? I'll give you 5 seconds before I give my answer. In 5 seconds, if you answer, please do answer in the comment section. Okay, let me just give you 5 seconds time. 5, 4, 3, 2, 1. So if your answer is yellow rose symbolizes friendship, you are absolutely correct. जिन्होंने कमेंट किया कि yellow rose symbolizes friendship, you are absolutely correct. So yellow rose, what is yellow rose? It is just a rose flower, but no, that symbolizes friendship. Red rose symbolizes love. Dove, a white color bird. Okay, dove. It is not sabun. Okay, it is not the Dove soap. It is a white color bird. Dove symbolizes or represents peace. शांति का प्रतीक होता है एक dove bird. Similarly, you see darkness. Darkness क्या symbolize करता है? Darkness may symbolize many things, but generally it symbolizes evilness. कोई भी चीज़ डार्क जो है वो evil symbolize करता है. So there are many such symbolisms that can be used in a poem. Okay, तो ये है symbolism कि एक object को एक meaning दिया जाता है. An object is given a meaning. Red rose given the meaning of love. Yellow rose given the meaning of friendship. Dove given the meaning of peace. Darkness given the meaning of evilness. So in the same manner, even our tricolor also, our Indian flag, the colors also symbolize many such things. Okay, if you know the three colors, the meaning of the three colors of our Indian flag, then you can comment in the comment section. Okay, we have saffron, we have white, we have green. So आप comment में जाके comment कर सकते हैं कि saffron क्या meaning represent करता है, white represents what meaning, and green
symbolizes what. So you can go and comment in the comment section. And we come to the last one here, which is hyperbole. Hyperbole is an exaggerated way of saying something to emphasize it. मतलब हम लोग जब बात करते तो कभी कभी हम लोग जो है बहुत ज़्यादा कह देते हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए. I'll again let me tell you, definition will never be clear without examples. हम लोग examples देखते हैं. I have told you a million times. मैंने तुमको हज़ारों बार कहा. Now can I talk million times? It is never possible. No one can speak a million times. Maybe 2 times, 3 times, 4 times, 5 times we can say. But you see, we mean it, we exaggerate in such a way that I have told you many times, don't do this. Why are you doing that? So million times here means many times. Now to exaggerate that, थोड़ा सा ज़्यादा मैं बोल गया, I have told you a million times. तो थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, मेरे मीनिंग को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, टू मेक माई मीनिंग मोर इम्पैक्टफुल, आई यूज़ हाइपरबोल. Okay, then you say another example, this bag weighs 100 tons. You can never carry 100 tons, but somebody is carrying a bag which is very heavy. Now 100 tons here means very heavy. I'm trying to explain how heavy the bag is, so I use such a sentence that the bag weighs 100 tons. Okay, 1 टन उठाना ही impossible है, but ये एक बात करने का तरीका है. When we are trying to explain something, ये एक बात करने का तरीका है, we use hyperbole. इसलिए तो हाइपर हम लोग बोलते हैं ना, वो ज़्यादा हाइपर हो जाता है, गुस्सा. ओके, एनीवेज वट एवर इट इज़, बट मिलियन टाइम्स, 100 टन्स, ये सब जो है एक हाइपरबोल है. तो आप अगर ऐसे कोई सेंटेंसेस देखते हैं जहाँ पे एग्जेजरेट किया जा रहा है, इफ़ यू फाइंड सच सेंटेंसेस वेयर थिंग्स आर एग्जेजरेटेड, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट इज़ अ हाइपरबोल. ठीक है, ओके. सो आई होप ऑल द पोएटिक डिवाइसेस हैव बीन क्लियरली एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू. Even if you have any doubt, okay, you can comment me in the comment section, and do subscribe to my channel, like and share my videos. And I'm going to soon come up with a grammar marathon. I'll explain you the date in a couple of days. Let me prepare the topics nicely. We will have a grammar marathon with exercises and worksheets, okay? With love from Omni Gyan. That's all. Thank you so much for watching the video, and with love from Omni Gyan, and all the best to all of you. Thank you so much.